चलो आगे होंगे जितने, बाकी भागने वाली होंगे। कंपैरिजन टेस्ट, first is comparison test. The comparison test for series of positive term. These all are positive series tests, positive term series tests. Positive term means all the terms are positive, like this. All the terms are positive. ठीक, this is positive, मतलब all the term are positive, या सारी positive हो सकती है, सारी negative हो सकती है, negative कॉमन निकाल के positive बन जाती है, ठीक है. So these tests are applicable only for positive term series. It is clearly mentioned in that positive term series. ठीक. So what is comparison test? ठीक है. First, I discussed that there are total 4 type of comparison tests. Total 4 types ही किसकी हैं comparison test की, but we discuss only one test, one type. With that type we can solve any question. ठीक है. So there are total 4 types of comparison test. बेटा म्यूट करो तुमका माइक. So there are total 4 types of comparison tests, but we only discuss one type. With the help of that type, we can solve any question related to comparison test. So first, just remember the definition of comparison test. So what is the definition? Definition मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा साथ साथ, ठीक है. पहले समय नहीं लगेगी. With the help of example, बस आज मैंने यही कराना है comparison test, ठीक. Then with the help of one example, I try to understand this definition of comparison test. Suppose let two series, comparison test apply on two series. Let two series, let summation an, summation an understood is n from 1 to infinity. Let summation an and summation bn be two positive term series. So there are two series are given. If there are two series, okay, so you just divide an by bn, divide an by bn and take limit n tends to infinity. So from here, from first series we find the value of an, मतलब n term of first series, and second term is n term of second series, and we divide both the n term an by bn and then take limit n tends to infinity. Then there must be some answer. There must be some answer. Suppose answer is L. Now, if this L is finite or non-zero, zero नहीं होना चाहिए, non-zero. If this L being a finite or non-zero, then summation an and summation bn converge or diverge together. What is the meaning of this line? If this equal to finite, अगर आपका आंसर 1 2 3 5 7 9 ऐसा कुछ आ जाता है 1/2 any finite number other than 0, so then ये याद रखना definition, then summation an and summation bn are both converge or diverge together. Anyone, what is the meaning of this line, both converge or diverge together? Anyone, what is the meaning of this line according to you? Both converge or diverge together. ਸਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਈ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਨਵਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, मतलब ਦੋਨੇ ਕਰਨਗੀਆਂ. हाँ जी, इसका मतलब है if one series is convergent then other series also convergent. If one series is divergent then other series is also divergent. इसका मतलब है if bn is convergent then an is also convergent. If bn is divergent then an is also divergent. So this is a meaning converge and diverge together. जो एक चीज करेगी वही दूसरी चीज करेगी, that is together. ठीक है. So this is the first. Now it is possibility when we put n tends to infinity answer may be 0. So this is the first case na, answer any finite number. Second case answer may be 0. Then only check bn. Then only check bn. If bn converges then an also converges. Divergence के लिए कोई बात नहीं है, only check divergence आए फिर ही नहीं हम कुछ कह सकते. ठीक है. Converge आए, if bn converge then summation an is also converge. And third possibility is that if we put the limit, answer may be infinity or minus infinity. And answer infinity, infinity minus infinity नहीं आता, infinity. Suppose answer is infinity.
देन वी चेक बी एन। चेक हमेशा बी एन ही करना है, चेक हमेशा क्या करना है, वी ऑलवेज चेक बी एन। इफ बी एन डिवर्जिस then an also diverges. Bn diverges, then an is also diverges. So this is the definition of comparison test. So what is the comparison test? मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा. If there are two positive term series an and bn are given, then find the nth term of first series, that is an. Find the nth term of second series, that is bn. Divide an by bn. ठीक है? Then take limit n tends to infinity. There must be some answer. If that answer is L, if L is finite or non-zero, then what is the definition? Then summation an, summation bn converge or diverge together. Second case, if limit n tends to infinity an by bn equal to 0, then only check for summation bn. If summation bn converges, then an is also converges. Third, third, if summation answer is an infinity, then check only for bn. If bn diverges, then answer is, then that is also diverge. An is also diverge. So there are three cases, and this is a whole is comparison test. There are two types. The all definition all test is very important. दो नंबर में सिंपल क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन कंपैरिजन टेस्ट, बस डिफाइन कंपैरिजन टेस्ट. सो दिस इज टेस्ट वन. इसका ही कोई एक पार्ट होता है छोटा सा पी टेस्ट. ये सेकंड टेस्ट नहीं है, ये डैट इज कम्बो में आते हैं, दोनों इकट्ठे लगते हैं. पी टेस्ट, ठीक है, कभी भी एक कंपैरिजन अकेला नहीं लगता, ए पी को साथ ही लेके चलता है. तो दिस इज, हम इसको इसका पार्ट ही मानते हैं कंपैरिजन. पी टेस्ट क्या होता है? सपोज एनी सीरीज इज गिवन लाइक दिस, समेशन 1 बाय एन पी. एन है यहाँ टर्म और एनी पी नंबर इज गिवन. सो इफ दिस पी, याद करना है, इफ पी इज ग्रेटर देन 1, then this series is convergent. If p is less than equal to 1, then this series is divergent. Suppose आपका क्वेश्चन आ गया 1 बटा n की पावर क्यूब. सो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा. सपोज सो कैसे चेक करेंगे? नाउ इन दिस केस p कितना है? इन दिस केस 3. p की वैल्यू चेक करेंगे. इफ इट इज ग्रेटर देन 1, then this series is convergent. If it less than or equal to 1, then this series is divergent. So what is it, is convergent or divergent? In this case this is Converge. convergent. ठीक है. Now for question is 1 bata 1 by n. For this 1 bata 1 by n. Now what is p? In this case p equal to 1. P equal to 1. For p equal to 1, that is divergent. ठीक है, that is divergent. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें. लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई दीज टू टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस एंड डिवर्जेंस ऑफ द सीरीज. नाउ जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऑल दी क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, एक ही लाइन लिखी होगी, डिस्कस दी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस ऑफ द सीरीज. नथिंग रिटन अदर देन दिस. स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी आज के बाद, only one line is there. Discuss the convergence or divergence of series. It is not written to solve which method. आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि which method you have to apply. It may be any method. That is practice. वो मैं बताऊंगा how with the help of practice we can identify which method is applied to which series. ठीक है. So in this case we discuss only comparison and p-test. So this is the question of comparison. वो बाद में पता चलेंगे how to check. ठीक है. Suppose clear है, ये clear है. Only one line is written, discuss the convergence and divergence of the series. इसका मतलब check करो whether the series is convergent or divergent. Or any series is given. Nothing is given. Any one series is given. So what is the first step? Is always, what is the first step? Find the nth term. Find the, so summation an, find this an. मैंने find कर दिया हो ना. So this is your an term. So this is your an. So what is an? So first is find the value of an. First is an value is always given. What is the value of an? So first step is find the value of an. But for comparison test we need an and bn. ठीक है.
For comparison test, we need AN and BN. We want two series, but here is only one series AN. So mostly to apply the comparison test, we take BN. We let करते हैं, let BN. BN हम कैसे लेना है वो मैं बताने जा रहा हूँ. How to take BN? BN हम क्या करेंगे? Let अपनी तरफ से लेंगे BN. तो कैसे लेना है वो बताने जा रहा हूँ. So take maximum power of n common from here, numerator. Take ये ध्यान से समझना how to take bn. Take maximum power of n. So numerator higher power n. So take n common. So it become 2 minus 1 by n. Now take n common from here, here, here. So n. So n is 3 times. So n cube. So if we take n common from here, this become 1 plus 1 by n. If we take n common from here, it become 1 plus 2 by n. So बाहर कितना बन जाएगा n cube. Now cut the n. So 1 n is cancelled. What is left? 2n. 1 but n square is left. Whatever the value of this power n square is left, that is your bn. So what is bn in this case? 1 बटा n square. नहीं होगा समझ मुझे लगता है. Now I give one more example. Suppose a n is like this, n square plus 1, suppose n cube plus 4. Suppose a n is this, suppose. So, so first take n square common from here, take n square common from here. So this is 1 plus 1 bata n square. And we can also take higher power of n, so n cube. So it become 1 plus 4 by n cube. इसका कुछ नहीं है. It may be anything. Now, how many powers are cancelled out? 2. So what is left? What is left? 1 by n, 1 plus 1 bata n square and divide by 1 plus 4 by n cube. Very simple, no problem. So what is left? What left? 1 bata n. So in this case, bn is 1 bata n. And so in this case, we take bn. bn is 1 bata n. Whatever is left. अगर कुछ नहीं लेफ्ट बचा तो n की पावर 0 ले लेंगे. सपोज यहाँ भी आ जाए n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ भी आ जाए n स्क्वायर प्लस 7. सपोज so n square common from here, n square common from here, both n square are cancelled. We left with only this term 1 by 2 by n square and 1 by 7 by n square. Nothing is left now. Nothing is left because n square is cancelled. So in this case, we take n की power 0. Anything power 0 is 1. So in this case, bn is 1 by n की power 0. ये आता नहीं वैसे बताया knowledge के लिए. So what is the main concept? How to take bn? So bn, any problem in taking bn? Clear how to take bn? So Yes, sir. whatever the power is left, take bn is that. So bn is 1 bata n square. Now come to comparison test. What is the formula of comparison test? Now divide an and bn. If we divide an and bn, this n square are cancel out. We left only this term. Okay? So what is an bn is this. उसको काटना ही होता है. So that's why we take bn is that. ठीक है? So 2 minus 1 by n, 1 plus 1, 1 plus 2 by n. Now what is the step? Now take limit n tends to infinity both sides. After dividing a bata bn, we take limit. Now if I take limit here, this 1 bata infinity 0, 1 bata infinity 0, 1 bata infinity 0. What is left? So answer is 2. Now question depends on this. If this is finite and non-zero, then first case is applicable. If it is 0, if answer is 0, then second case is applicable. If answer is infinity, third case is applicable. 99% only first case is applicable. Okay? In all the your question of the book, 99 question only first case is applicable. So first case मतलब
answer must be finite and non-zero. So answer is finite and non-zero. If answer is finite and non-zero, then what is the definition? If answer is finite and non-zero, then what is the definition? Then both are convergence of the summation right. AL, यही लिखना है Convergent भैया, and लिखना है आपने convergent. then by comparison test summation AN and summation BN both converge, यही लाइन लिखनी है, both converge or diverge together. ठीक है, so I write it therefore, ये लिखना है, ऐसे लैंग्वेज लिखनी, therefore by comparison test, याद नहीं करना, याद ही हो जाएगा आपको, जितने क्वेश्चन हमने करा देने याद ही हो जाएगा. Summation AN and summation BN converge or diverge together. इसका मतलब जो एक चीज करेगी, if AN is convergent then BN is also convergent, if BN is convergent then AN is also divergent, same. ठीक है, now हम दोनों में से किसी एक को चेक करना है, तो we always check BN, we always check BN. What is BN? What is BN? 1 by n square. BN, what is BN is 1 bata n square. Now anyone, which method is applicable here if this type of question is come? So P-test. understand why I discuss p-test. So comparison and p-test हमेशा इकट्ठे लगते हैं. So now summation bn, but लिखना है, but bn is 1 but n square. So if there is some power of n is there, then apply p-test. What is p-test? What is p-test? This power. Now p is 2. Check this is greater than 1. This is greater than 1. So if this is greater than 1, if it is greater than 1, Convergent. so bn is convergent. So bn is convergent. So if bn is convergent, then so this summation pura summation bn is convergent. So by p test summation bn is convergent. Therefore given series an is convergent. an क्या था हमारा? an क्या लिया था हमने ये? इसका मतलब this question is convergent. This question is, so this series is convergent. So this is all comparison test. कोई 10% समय लगा है? What is the comparison test and p test? 100% लग गया है सर. 100% कभी नहीं लगना चाहिए, गलत होता है. I simply say 10% only. 10% mean how to find an first n term out. अभी तक जितना लेक्चर कराया in this मेन मतलब क्या है? What is how to find an, ठीक है, find the n term, ठीक है. Then comparison test definition. First learn the definition of comparison test and p test. If you write one time, this is very simple, आप ऐसे बोल दोगे सारी. ठीक है, एक बार लगती है बहुत बड़ी, आपको मैंने अगर अंडरस्टैंड होगी that this is very simple definition, कभी नहीं बोलती, लिखी जा सकती. ठीक है, then p test definition is also very simple. This is applicable only when some n power is given, denominator 1 bata n power is given, then we can only apply p-test, otherwise we cannot apply p-test. So जब भी टेस्ट लगेंगे p-test और comparison test, ठीक है. So sometime 2 marks question is come, बड़ी बार हुआ है question, suppose एक क्वेश्चन एक बार ये आया था यहाँ 3, check this is convergent or divergent. Anyone, but this series is convergent or divergent? एक बार ये क्वेश्चन आया था, check this series is convergent or divergent. ये बनेगा 1 बटा n की पावर 1/3. तो simple p test 2 marks question. We simple apply p test here. So what is p in this case? P is 1/3, that is less than 1. So therefore by p test this series is divergent. So this series is divergent. This is 2 marks question. ठीक है, check whether this series is convergent or divergent. ठीक है, इसको एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. ठीक है, बस. और किसी ने कुछ पूछना हो पूछ सकता है. एनी प्रॉब्लम? ओके है. No sir.
नोट्स भेज दूंगा, इसको नोट्स को अच्छी तरह पढ़ना, कंपैरिजन टेस्ट। सो मैंने बताया देयर आर टोटल 4 केसेस ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, आई डिस्कस ओनली वन, बिकॉज हमको तो पता ही होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, योर क्वेश्चन इन द बुक, ऑल दी क्वेश्चन, मतलब 90 एक 4 केसेस में बस यही केसेस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैं जो मेन काम करूंगा, जो बचा कुछ होता है वो एक दिन लास्ट में करूंगा, जैसे सीरीज में भी मैंने थोड़ा बहुत छोड़ा है, ठीक है। there's some portion left in series also, starting मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, some portion also left in sequence also, जो बताना जरूरी है, बाद में आता तो कभी नहीं है वो नॉलेज ओनली। तो कभी किसी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना हो तो ना हो तो लोग उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, एक आधा 2 नंबर का आ भी आता है, ठीक है। बट वी डिस्कस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं सीक्वेंस वो लाइन कंटिन्यूटी नहीं तोड़ना चाहता था, तो आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल, ठीक है। So this is the first test. Today we discuss first test, comparison and p-test. ठीक है? So total there are 7 tests. ठीक है? Step by step होते हैं, series by series. Algorithm देखा ना? तो first always we check first test. If first test is failed, then we check second. If second test is failed, then we apply third. If third is failed, four is failed, five is failed, six, and so on. Last is 7. लास्ट टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा करेंगे कि हम करेंगे सारे ही, बट आपको मैं सीधा बता दूंगा कि देर इज नो नीड टू चेक, फर्स्ट मिशन चेक करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट सभी के लिए चेक करेंगे ही करेंगे कि वो इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट और नॉट, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट और नॉट, ठीक है। उसके बाद हम सीधा ही शॉर्टकट लगा देंगे, लास्ट टेस्ट पे चल जाएंगे। हमको नहीं पता वो अगला लगना है कि नहीं लगना, पर वो तो लगना ही है ना, ठीक है। तो वो डेट इज गोस्ट टेस्ट है नाम उसका, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यू कैन डायरेक्ट कम टू गोस्ट टेस्ट ऑल्सो, ठीक। सो दिस इज, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया व्हाट इज क्या करने वाले हैं, मतलब आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है।